हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट मैट्रिक्स स्पेस। आज हम मैट्रिक्स स्पेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 5 की। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डज डी ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डिफाइन अ मैट्रिक ऑन आर जस्टिफाई। तो हम इसे सॉल्व कैसे करें? जो हमें गिवन दिया गया है वो हम पहले लिख देंगे। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई। क्लियरली डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। क्या है हमारे डी ऑफ एक्स की वैल्यू? साइन मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब साइन को हम मॉड के बाहर लिख देंगे, तो फिर आएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। साइन 0 क्या होता है? पाई इज इक्वल टू एन पाई। साइन के सारे पाई 0 होते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई प्लस एन पाई। दिस इज नॉट इक्वल टू if and only if x equal to y, but this is x is not equal to y, so d of x y is equal to sin mod of sin x minus y is not a metric on R. Okay, our second question है, find the interior point of the following subset on R with usual method. तो हमें इस क्वेश्चन के क्यू की इंटीरियर पॉइंट निकालनी है। तो हम किस निकालें? फॉर ईच क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, क्यू माइनस एप्सिलॉन कॉमा क्यू प्लस एप्सिलॉन। दिस इज अवर डिफिनेशन टू फाइंड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस डज नॉट बिलोंग टू क्यू फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हेंस क्यू डज नॉट बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ क्यू। Therefore, interior point of Q, therefore interior of Q is R. Then question D is, let X be a matrix space and A, B belongs to X. If A is closed and B is open, then show that A minus B is closed. अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। डी का आंसर है, तो हम पहले गिवन लिख देंगे। हमें गिवन क्या दिया है? X be a matrix space. Let X be a matrix space. A is closed and B is open. Claim हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है? A माइनस B इज क्लोज। तो हम इसकी एक रफ डायग्राम बना लेंगे। दिस इज अवर A मैट्रिक एंड दिस इज अवर B मैट्रिक। दिस इज अवर A सेट। तो हमें A माइनस B पूछा है, तो हम कैसे लिख दे सकते हैं? A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A माइनस बी इज इक्वल टू क्लोज सेट। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स, hence A minus B is closed. Our equation is prove that matrix space XD where X is equal to 0, 1 and D is a usual metric on X is not complete. तो इसका आंसर है since take a sequence xn where xn is equal to 1 upon n, n belongs to capital N, is a Cauchy sequence but not convergent in 0, 1. For given epsilon greater than 0, choose n greater than 1 upon epsilon, then distance of xn, xm is equal to mod of xn minus xm for all m, n greater than equal to capital N, less than equal to is equal to mod of 1 upon n minus 1 upon m for all m, n greater than equal to capital N is equal to m
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, m माइनस एन अपॉन m इंटू एन फॉर ऑल m कॉमा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल एन लेस दैन इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लेंगे। सपोज हमने कि m इज इक्वल टू m अपॉन एन, m अपॉन m इंटू एन होना फॉर ऑल m कॉमा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल एन। इसमें से हम m को कैंसिल कर देंगे, लेस दैन इक्वल टू 1 अपॉन एन फॉर ऑल m कॉमा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल एन। बट n greater than equal to capital N gives 1 upon n less than equal to 1 upon capital N. Also, n is greater than 1 upon epsilon gives 1 upon n less than epsilon. This is equation number 1. Hence, distance of xn comma xm is less than equal to 1 upon n less than 1 upon capital N less than epsilon from equation 1. Okay. Gives, that is distance of xn comma xm less than epsilon for all n comma m greater than equal to capital N is equal to sequence xn is equal to 1 upon n is a Cauchy sequence in 0 1, but sequence xn where xn is equal to 1 upon n, comma n belongs to capital N is not convergent in 0, 1. Next question is, give an example of closed and bounded subset of Q but not complete. इसका आंसर है F का आंसर. Let XT be a discrete matrix space. Okay. Every singleton in capital X is open because for x belongs to capital X, comma b of x comma 1 upon 2 is equal to singleton X. Now capital X is equal to u of x belongs to capital X into singleton X. Therefore, set of singleton X such that x belongs to capital X is open cover of capital X. But next page. But it has no finite subset because x is finite. Because x is infinite gives x is not compact set. But x is bounded for any f of x belongs to capital X and r greater than 1. B of x r is equal to capital X and any subset of discrete matrix space is closed. Hence, X is closed. Thus, X is both closed and bounded in Q, but not compact. This is the example of closed and bounded set in Q, but not complete. But not complete. Okay. Our next question is, if A and B are any two dense subset of a matrix space X, then show that A union B is dense. तो इसका आंसर है गिवन हमें दो सेट गिवन दे A and B. If then given A and B are two dense set, B two dense set in matrix space XT. Okay, so A bar is equal to X and B bar is equal to X. ये हमने कैंसिल किया है. Now A union B whole bar is equal to
a bar union b bar, okay, is equal to x union x is equal to x. A union b bar is equal to x. Hence a union b whole bar is also dense. Question is question 2, attempt in 1, okay, but दोनों भी solve करनी. Let x d, first question, let x d be a metric space, x belongs to capital X and r greater than 0. Prove that the open ball b of x r is open in x, okay. इसका आंसर हम लिख देंगे question 2 in फर्स्ट क्वेश्चन, ओके. इसका आंसर तो हम फिर लिख देंगे गिवन एक्स डी इज मैट्रिक्स स्पेस. अब हम इसकी एक रफ डायग्राम बना लेंगे. दिस इज आवर मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, ओके, एंड दिस इज आवर ओपन बॉल. तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सेंटर लिया एक्स और यहाँ पर एक पॉइंट लिया वाई और इसके ऊपर एक क्लोज बॉल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक रेडियस दी, इसको नाम दिया आर और इसको नाम दिया R1, ओके. और ये हमारा बी ऑफ एक्स आर, ओके. तो हमने लिख दिया पहले गिवन एक्स डी इज मैट्रिक्स स्पेस, लेट बी ऑफ एक्स आर बी ओ ओपन बॉल विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर. तो हमारा क्लेम क्या है, बी ऑफ एक्स आर is open set, okay. B of y comma r1 is subset of b of x r, okay. So y belongs to b of x comma r. Distance of xy less than r. Take z belongs to b of y comma r1. This is equation number 1. Distance of zy is less than r1, whereas x is not equal to y. Distance of xy is greater than 0. Let r1 की हम किस लिए r1 को किस लिख सकते हैं, r1 is equal to r minus the distance of xy is greater than 0 as distance of zy less than r1, but r1 is equal to r minus distance of xy. Distance of zy less than r minus distance of xy. Then distance of xy plus distance of zy less than r. Distance of xy plus distance of yz less than 1. जैसे हमने सही तरीके से लिख दिया. सो डिस्टेंस ऑफ xy प्लस yz, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xz इज लेस देन r, ओके. तो हम इसे डिफिनेशन के हिसाब से लिख देंगे, z बिलोंग्स टू b ऑफ एक्स आर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. बाय इक्वेशन 1 and 2, by equation 1 and 2, b of y comma r1 is subset of b of xr. Hence b of xr is open set. Then our next question is prove that the limit of a sequence in a metric space xd is unique. See this question answer. Question 2 b second answer. Question 2 is second answer, okay. So given xd is matrix space, let sequence xn be a sequence in capital X. On contradiction, assume that sequence xn converges to two different limits x and y in capital X, okay. That is xn gives x and xn gives y, okay. Then by using Hausdorff property, there exists एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारी हाउसडॉफ प्रॉपर्टी क्या है, बी ऑफ एक्स आर इंटरसेक्शन बी ऑफ वाई आर इक्वल टू 5. एज पहले हम एक्स एन गिव्स एक्स, एज एक्स एन गिव्स एक्स फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, सच दैट
distance of xn comma y less than epsilon for all small n is greater than equal to capital N1. If xn gives y gives for given epsilon greater than 0, there exists n2 belongs to capital N such that distance of xn comma y less than epsilon for all n is greater than equal to n2. Choose n is equal to max of n1 n2. Distance of xn comma x less than epsilon for all n is greater than equal to capital N, and distance of xn comma y less than epsilon for all n is greater than equal to capital N. That is, xn belongs to b of xr for all n is greater than equal to capital N. That is, अब इस स्मॉल n को कन्वर्ट करेंगे कैपिटल n में. सो x कैपिटल N बिलोंग्स टू b ऑफ एक्स आर, b ऑफ x कॉमा समेशन, इक्वेशन 1. सिमिलरली x n belongs to b of y comma epsilon for all n greater than equal to capital N. That is, इसमें भी स्मॉल n को कन्वर्ट करेंगे कैपिटल n में बिकॉज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N. इसे इक्वेशन 2. सो देन xn belongs to b of x comma epsilon intersection b of y comma epsilon. A contradiction. There, hence, sequence xn does not converges to two different limits. Our next question is question 2b means B's first question. Let x be pure metric space. Define delta of xy is equal to d of xy upon 1 plus d of xy for all xy belongs to capital X. Show that delta is a metric space. Delta of xy is equal to d of xy upon 1 plus d of xy. Okay. First we check delta of xy greater than equal to 0 as, so हम लेंगे d of xy is greater than equal to 0. देन अब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें कुछ फर्क हो जाएगा नहीं. सो d 1 प्लस d of xy is greater than equal to 0. अब d of xy डिवाइड बाय 1 प्लस d of xy, तो कैसे लिखेंगे d of xy अपॉन 1 प्लस d of xy is greater than equal to 0. तो हमें ये वैल्यू किसकी, ये वैल्यू हमें गिवन है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, d और डेल्टा ऑफ xy is greater than equal to 0. Then first property is hold. Then second property we check d of xy, d of x comma y equal to 0 if and only if x equal to y, as delta of xy is equal to 0 gives delta of xy की वैल्यू क्या दी गई है, d of xy अपॉन 1 प्लस d of xy इज इक्वल टू 0. ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या है तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 गिव्स d of xy इक्वल टू 0 गिव्स. तो हम मैट्रिक्स स्पेस के डिफाइन के अनुसार इसको हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y. देन वी चेक delta of xy is equal to delta of yx. Okay, consider delta of xy is equal to, this is our given value d of xy upon 1 plus d of xy. Okay, अब हम x और y को रिप्लेस मीन्स x के जगह पर y और y के जगह पर x ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, d ऑफ वाई एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसे डेल्टा ऑफ वाई एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड. देन वी चेक फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ओके, वी चेक
d of xz less than equal to d of xy plus d of yz. Okay, now d of xz less than equal to d of xy प्लस डी ऑफ वाई जेड. अब हम इन दोनों में बोथ राइट हैंड और लेफ्ट साइड पर ऐड कर देंगे. 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, देन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल लेने से ए लेस देन इक्वल टू ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा. ओके, 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, अब हम बोथ साइड माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे. -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड ग्रेटर देन माइनस नहीं मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन साइन चेंज होता है, लेस देन इक्वल टू -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, अब दोनों में से 1 बोथ साइड में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 1 - 1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, अब हम 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. ओके, जैसे कि डी ऑफ एक्स जेड -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू, अब हम क्या लिखा था, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड -1/1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, अब ये प्लस और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर भी. तो यहाँ पर बात क्या बाकी हो, डी ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड. ओके, अब हम इसको सेपरेट लिख देंगे. डी ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ वाई जेड. तो हमें जो गिवन दिया है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा ऑफ वाई जेड. अब हमने ये चारों भी प्रॉपर्टी, हमारी ये चार प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो गई. इसके कारण हेंस डेल्टा इज अ मैट्रिक्स स्पेस. हेंस डेल्टा इज ए मैट्रिक्स स्पेस. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2b. Second question, let xn and yn be sequence in a matrix space xd such that xn gives x and yn gives y. Then prove that delta d of xn, yn gives d of xy. So इसका आंसर देखते हैं. क्वेश्चन 2b. Second, suppose xn and yn are sequences in a matrix space xd gives xn and yn are convergent. Okay, therefore let xn gives x and yn gives y as n tends to infinity. So d of xn comma x less than epsilon upon 2 by definition. D of yn comma y less than epsilon upon 2. Distance of xn comma yn less than equal to distance of xn comma x plus d of xy plus d of y comma yn less than epsilon upon 2 plus d of xy plus epsilon upon 2 gives d of xn comma yn gives d of xy as n tends to infinity. Our next question is question 3a. First, prove that identity function on matrix space x is continuous. So इसका आंसर देखेंगे. Question 3a. Let function xt gives xd defined by f of x is equal to x, comma for all x belongs to capital X. X gives x. First, we show f is constant at arbitrary x naught belongs to capital X. Take sequence xn such that xn gives xn. Claim f of xn gives f of x naught. F of xn gives f of
xn is equal to xn for all n. F of x naught is equal to x naught. X naught belongs to capital X, that is f of xn is equal to f of x1 comma f of x2 up to so on f of xn and so on. Okay, is equal to x1 x2 up to so on xn. F of xn is equal to xn gives x naught is equal to f of x naught, that is f of xn gives f of x naught. Hence, as xn gives x naught gives f of xn gives f of x naught, but x naught is arbitrary point x. Therefore, identity function on matrix space x is continuous. दिस इज द थ्योरम, और हमें थ्योरम जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है, इसलिए आप भी जैसे थ्योरम है वैसा कि वैसा ही लिख दो. ओके. Our next question is let x, y be matrix spaces. Show that a map function x gives y is continuous if for every closed set v subset y its inverse image f inverse of v is closed in x. So अब हम देखेंगे इसका आंसर. हमें गिवन दिया है. हाँ, एक हमारा तो कितने नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन 3A सेकेंड. ओके, इसका आंसर क्या है? गिवन x, y be matrix space. Assume that function x gives y is continuous function. Okay. Claim f inverse v is closed in x, where v is closed in y, as v is closed in y. Okay. Y complement is open in y. Then f inverse v complement is open in x, that is f is continuous function. Okay, but f inverse v is equal to x minus f inverse of v complement. So f inverse of v is closed in x. Conversely, assume that, अब हम इसका कॉन्वर्स भी प्रूव करके देखेंगे. assume that f inverse of v is closed. Okay, then in closed in x. Okay, where v is closed in y. Claim f is continuous function. Or we show inverse image of open set is open. Let v be an open set in y gives y upon y minus v is equal to v complement is closed in y. Okay, gives f inverse of v complement is equal to f inverse y minus v is closed in x. ये तो हमारा assumption था ना, राइट ना? ओके, complement of, therefore complement of f inverse of v complement is open in x, that is x minus f inverse of v complement is open in x. F inverse of v is equal to x minus f inverse of v complement. RHS of above is open. Hence, LHS, that is f inverse v is open in x, gives f is continuous function. Our next question is question 3B. First, show that any two closed set and bounded intervals in R are homomorphic. So इस एग्जाम्पल के लिए हम any two closed set कंसिडर कर लेंगे. ओके, so suppose we consider two closed set function x gives y, that is f of 0 1 gives f of function 0 closed set 0 1 gives closed set 0 2. तो हमारा क्लेम क्या होगा? हमने जो टू सेट कंसिडर किए हैं वो हमें होमोमॉर्फिक दिखाने के. ओके, होमोमॉर्फिक दिखाने के, दैट इज फंक्शन f is 1 1 on 2 and
continuous. Also f inverse is continuous. Also f inverse is continuous. Here as f is here as f from 0 1 close set 0 1 gives close set 0 2 given by f of x is equal to 2x. X belongs to close set 0 1. So first we will we check f is 1 1 as if f of x is equal to f of 1. So then if तो हमें f of x की वैल्यू क्या है 2x is equal to 2y. So 2 is cancel, x equal to y, that is x equal to y. Okay, then we check function f is on 2. Here f of x is equal to क्या है 2x is equal to y. So x is equal to y upon 2. ये हमारा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके डिवाइड होगा. नाउ f of x is equal to f of, तो हमारी f x की वैल्यू क्या है हमें y by 2 y upon 2. सो तो हम इसे हमने क्या कंसिडर f of x की वैल्यू क्या कंसिडर की थी 2x. तो हमें f of x इस ऐसे लिख देंगे 2 इंटू y अपॉन 2. 2 कैंसिल इज इक्वल टू y. सो f इज ऑन 2. देन वी चेक थर्ड f इज कंटिन्यूस. हियर f of x is equal to 2x, comma x belongs to open set 0 1. We know polynomial function is always continuous. Hence f is continuous. Okay, then we check fourth property f in fourth property होम्योमॉर्फिक है क्या नहीं वो दिखाएंगे. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी f इनवर्स ऑफ 0 1 gives 0 1 is continuous. Okay, f inverse of x is equal to polynomial function gives f inverse is also continuous. So therefore closed set 0 1 is homeomorphic to closed set 0 2. Hence two closed and bounded intervals in R are homeomorphic. Okay, our next question is question 3b. Second question, show that a compact subset of a matrix space XD is bounded. So अब हम इसका आंसर लिख देंगे. Question 3b second का आंसर, let XD be a matrix space. Let K is subset X be compact. Okay, fix any x naught belongs to capital X. Consider the open cover set of B of x naught comma n such that n belongs to capital N. This open cover must have finite subcover for K. Say set of B of x naught comma nj such that 1 is less than equal to j less than equal to n. Since B of x naught comma m is subset of B of x naught comma n for all n is greater than equal to m, gives K is subset of B of x naught comma n replace capital N for n is equal to max of set of nj such that 1 is less than equal to j less than equal to n. So gives K is bounded. Okay, our next question is question 4a. First question, prove that any continuous function f from a compact matrix space xd to another matrix space yd is bounded. So अब हम इसका आंसर लिख देंगे. Question 4a first answer, let xd be a compact matrix space. Let K is subset of X is compact matrix space, and
function x gives y is continuous function. जो गिवन दिया है पहले हम वो लिख देंगे. ओके. क्लेम. तो हमारा क्लेम क्या है? फंक्शन f इज बाउंडेड फंक्शन. दैट इज f of x is a bounded subset of y. Is a bounded subset of y. Fix any y belongs to capital Y. Consider the set b of y comma n such that n is equal to 1, 2, 3 and so on. This collection cover f of x and y both since f is continuous. Gives f inverse b of y n is open in x. Let un is equal to f inverse b of y comma n is open in x. Okay, let un is equal to, अब हम इसका सेट लिख देंगे, f इनवर्स ऑफ b ऑफ y comma n is equal to set of x belongs to capital set of x belongs to capital X such that d of f of x comma y less than n. This is our set. Okay, is open set. Here x belongs to un gives x belongs to f inverse of b of y comma n gives f of x belongs to b of y n is subset of b of y comma n plus 1. Okay, gives f of x belongs to b of y comma n plus 1 gives x belongs to f इनवर्स ऑफ, यहाँ पर f यहाँ था, यहाँ जाकर इनवर्स हो जाएगा. ओके, f इनवर्स ऑफ b ऑफ y comma n plus 1 gives x belongs to un plus 1. un is subset of un plus 1. n is greater than equal to 1. The collection of set un such that n belongs to capital N is an open cover of x, but x is compact. Okay, gives x admits a finite subcover. Say finite subcover. Say set of un I such that 1 less than equal to I less than equal to m is a finite subcover of x if n is equal to max of n1 n2 up to some n then x is equal to un gives f of x is equal to b of y comma capital N. That is f of x is subset b of y comma capital N. So f of x is bounded. Hence true. Our next question is, prove that matrix space HD is connected if every continuous function f from x gives plus or minus 1 is a constant function. So हम इसका आंसर देखेंगे. Question 4 second. Okay, इसका आंसर है, suppose x is connected. Let function x gives plus or minus 1 be continuous function. Claim f is constant map. Assume that f is not compact. Sorry, f is not constant. Let a is equal to set of x belongs to capital X such that f of x is equal to 1. So first हम हमें प्लस और माइनस 1 दिया गया है, तो फर्स्ट हम 1 लिख देंगे. दैट इज a इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 1 एंड b इज इक्वल टू, अब हम माइनस 1 का सेट लिख देंगे. x बिलोंग्स सॉरी y बिलोंग्स टू, यहाँ पर y बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 गिव्स b इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ माइनस 1. हियर consider y is equal to 1 comma minus 1 with discrete matrix gives
1 and -1 are both open and close as function f is continuous. Gives f inverse of 1 and f inverse of -1 are both open and close. A and B are both open and close. Also, X is equal to A union B and A intersection B equal to phi. A and B are non-empty, which is contradiction to our supposition X is connected. That is, therefore our assumption that is that f is not constant is wrong. Gives function f must be constant function. Then our next question is question 4b. First question: let A be a connected subset of a metric space XD and A subset B subset A bar. Then show that B is connected. Okay. So see this question answer. Question 4b first answer. Let A जो हमें गिवन दिया है वो पहले लिख देंगे A subset B subset A bar. Let function f from B gives plus or minus 1 be a continuous function. To show B is connected, हमें क्या दिखाना है? Connected, B is connected. That is, to show f is constant on B. Capital B. Given that A is connected, therefore f is constant on A. Say 1. तो हम इसे इक्वेशन 1 कह देंगे. ओके. लेट B belongs to capital B. Therefore f is continuous. So continuous at B for open set. So set f of B in plus or minus 1. There exists open set U union of there exists B such that f of U is subset of f of B. Okay. Since B is subset of A bar, B is limit point of A. In particular, there exists A belongs to capital A union capital U. We find f of A belongs to set of f of B, or f of A is equal to f of B is equal to 1. Thus, f is constant on B. Thus, B is connected. Yes, true. आज हमने ज्योमेट्रिक स्पेस की क्वेश्चन पेपर सॉल्व की है. उसकी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी. आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.